प्लस बन गए, इस लेवल जो है इसको लेके चले गए हैं. ये हमारा So we're 6 seconds live. Welcome everyone to Generalization Z. We're going to discuss आज 90 दिन और इसहाक डार साहब और डॉलर, और ये डिस्कशन हम जेन एक्स के साथ करेंगे. जेन एक्स आपको पता है कि शुरू और ख़त्म जो है वो तैमूर झगड़ा, आरिफा, नूर और मुशर्रफ ज़ैदी पे होती है. तो हम तीनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं. ये पहले कवर था और अब हम तीनों जो है आपके खिदमत में पेश हो गए. असल में मुझे गाइस बहुत मजा आ रहा है इसके वो चीजें बना के ना, ग्राफिक्स बना के. अब आप नोट करेंगे कि ये पिंक रंग का, फूशिया रंग का जो है नीचे वो लेबल है, या इसको क्या कहना चाहिए, बैनर है. ये जनरेशन एक्स में मेट्रोसेक्सुअल्स कम होते थे, लेकिन आप मुझे लगता है एक मेट्रोसेक्सुअल ही उसमें. हाँ, and I have no sort of issue with that. I'm actually very excited to be one of those. True to my Gen X stature, I don't mind being metro. हम ये देखना चाह रहे थे कि कितने लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, ताकि कुछ लोगों को भी और ऐड कर लें. और तैमूर, मैं आरिफा से कह रहा था कि इकोनॉमी पे थोड़ी सी बात करने के लिए अगर आपकी इजाजत हो तो हमारे दोस्त हैं उज़ैर यूनुस, जो पाकिस्तानी पॉडकास्ट पे होस्ट करते हैं, एटलांटिक काउंसिल पे वाशिंगटन में बैठते हैं और बहुत गहरी और कड़ी नजर रखते हैं इस पे, मईशत के मामलात पे. तो अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं उज़ैर को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. बिल्कुल कर. हम फिर जैसे ही वो आएंगे तो हम उनसे, हाँ, जैसे ही वो आएंगे तो हम उनसे इकोनॉमी पे थोड़े व्यूज ले लेंगे. और उससे पहले मे बी आरिफा, कैन वी स्टार्ट विद यू इफ वी हैवंट लॉस्ट यू. ये जो कल पहले तो जरा ये जो म्यूजिक है अजीब किस्म का, इसको हम ऑफ कर देते हैं. बहुत मजा आया इसको सुनते हुए. Intro play ठीक था, but I was worried about the fact that this was going to continue in the background, you know. No, we're good, and let me also change the background here so that we don't have the. You know, I feel as if I'm sitting in the Archie Comics soda shop. हाँ, तो मतलब you know, anything that works as long as वो सारा है ना, वो मुझे अपना बचपन की Archie Comics याद आ गई. As long as we're having fun. But I'll tell you who's not having fun, Arifa, and maybe you can kick off the discussion today. ये जो कल फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, at least मैं तो काफी confused सा था, because I was like, yes, जो होना चाहिए था वो तो हुआ है, और वो ये कि भाई 90 दिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं है. लेकिन फिर जब आप जजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें तो लग रहा है कि गुंजाइश है. तो ये क्या अजीब मामला है? ये क्या सिर्फ मेरा कंफ्यूजन है या वाकई लोग कंफ्यूज्ड हैं, और ये क्यों ऐसा हुआ आरिफा? देखिए, इसमें 2-3 मेरे ख्याल में इश्यूज हैं. पहला तो सबसे यही है कि इतनी ऑब्वियस चीज पे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना क्यों पड़े. अगर 2 सूबों के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो या असेंबलीज हैं वो डिसॉल्व हो गई हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट्स बन गई हैं, तो फिर तो असूलन हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि अब इलेक्शंस ही होंगे और होने चाहिए. एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपनी आईनी मुद्दत से उसको ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरे जाती ख्याल में. तो सबसे पहला तो हमारा फेलियर एज अ डेमोक्रेसी आई थिंक ये है कि हमें ये इशू, हमें लगा कि ये इशू भी है और हम उसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए. सुप्रीम कोर्ट में जब हम एक दफे ले गए तो वहाँ एक तरफ तो हमारी सियासत के मसाइल, दूसरा ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जो अब इख्तलाफात हैं वो बहुत पब्लिक हो गए हैं. ये जो बेंच के हवाले से एक कंट्रोवर्सी चली हुई है कि चीफ जस्टिस साहब बेंच बनाते हैं, अपनी मर्जी से बनाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है. ये इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से हम ये बहस सुन रहे हैं, मगर फ़र्क भी है. इफ्तिखार चौधरी में भी फ़र्क है और आज की चीफ जस्टिस में भी फ़र्क है. उसके अंदर कुछ वक्त का भी फ़र्क है, बिकॉज ऑब्वियसली इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस बन के तीसरी मरतबा वापस आए थे तो you know there was a certain populist
image that he had and he was allowed to live up to it by the rest of the judges. So वो शिकायत भी करते थे तो कम करते थे. अब बंदियाल साहब से नहीं मैनेज हो रहा, वो नहीं मैनेज कर पा रहे जो उनके मुख्तलिफ जजेस हैं, और उसकी वजह से शोर भी मच रहा है. और ये बेंच का इशू जो है, जो गलती हम कह सकते हैं या तनकीद हम कर सकते हैं बंदियाल साहब पे, देखिए वो हर कोर्ट में होती है. अब हम लोग ज्यादा पब्लिकली गुफ्तगू नहीं कर सकते, बट कॉलीग्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, which is the court obviously that's closest to where I live and work apart from the Supreme Court, वहां भी इस तरह की शिकायत आती हैं कि ये कौन फैसले कराए कि कौन सा केस किस बेंच में जाएगा और किस बेंच में नहीं जाएगा. वहां भी ये इश्यूज हैं. इसको एड्रेस करने की बिल्कुल जरूरत है. किसी भी इदारे में, चाहे वो जुडिशरी का हो या कोई और इदारा हो, या हम पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात करते हैं, एक फर्द वाहिद के पास नहीं बहुत ज्यादा पावर्स होने चाहिए, मगर इसको एड्रेस करने के और मेरे ख्याल में मौके भी हैं और होना भी चाहिए. एट द मोमेंट द इशू वाज कि इलेक्शंस 90 दिन में होने हैं. जजमेंट जितनी भी कंट्रोवर्शियल हो, जितने भी उसमें मसाइल हो, और वो मसाइल हैं और वो बेसिकली इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं. मगर दैट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे पास 2 सूबों में इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं हैं और वहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट्स और वहाँ इलेक्शंस होने हैं. चाहे परवेज इलाही साहब ने या इमरान खान साहब ने या महमूद खान साहब ने गलत काम किया है, तो जमहूरियत तो यही है कि फिर लोग उनको बताएंगे वोट देके कि उनको ये चीज अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी. ये अब हम कोर्ट से फैसले तो ना करवाएं तो बेहतर है. ये कोर्ट से, तैमूर आप बताइए ये व्हाई, I mean again it boggles at least my mind that this is justiciable. That's an actual word. मैंने जाके फिर चेक भी किया कि ये मतलब कोर्ट में गया क्यों, और मतलब ये नौबत कहाँ से आई, कैसे आई. इस पे obviously आपका एक पार्टी का भी मौकफ है, but what do you think this means for the system at large? I'm not talking just about जमहूरियत, लेकिन एक सिस्टम का इक्विलिब्रियम, एक रियासत का, एक सोसाइटी का इक्विलिब्रियम के लिए इसके क्या मानी है और ये कितना मानी खेज है? तैमूर. मुशर्रफ, बहुत मानी खेज है. You know, हम normally कोशिश करते हैं. I want you to go through the whole response, but I'm just going to welcome Uzair Yunus into the stream and then come to this. I think it's really important. पहले आप इसको डील करेंगे और फिर हम उज़ैर को जो है वो इसमें लेके आने की कोशिश करेंगे. Welcome, Uzair. We're just quickly, we've already introduced you, so the viewers know that you're with us. We're just talking about trying to understand ये जो 90 days वाला सारा चक्कर है, और तैमूर से मैंने ये अभी रिक्वेस्ट किया कि वो जरा थोड़ा हमें समझाएं कि उनके व्यू में ये नौबत कैसे आई कि इतना बेसिक आईनी सवाल जो है उस पर कि इसमें कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है इसमें कंफ्यूजन की, लेकिन अपेरेंटली है. सो तैमूर, आपने शुरू किया था अपना जवाब, और हाँ जी. ऑल्सो वेलकमिंग उज़ैर और मुशर्रफ. हम कोशिश करते हैं कि इस डिस्कशन में, चूंकि हमारे भी पॉलिटिकल ख्यालात में फ़र्क होता है, कि इस व्लॉग में हम पॉलिटिक्स को उस तरीके से लाएं कि वो एक टिपिकल पॉलिटिकल व्लॉग ना बन जाए. लेकिन आज आपके शायद 1, 2, 3 टॉपिक्स मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, शायद हमारे टिपिकल जो टॉपिकल एंगल्स होते हैं उससे ज़्यादा पॉलिटिकल है, लेकिन मेरे ख्याल में होने भी चाहिए. तो if give me a couple of minutes, यार, it is very clear कि कोर्ट जाना नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि हमारी जमहूरियत अभी इतनी कमजोर है कि इस टाइप के इश्यूज में जाना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली ये एक अच्छी बात है कि ऐसे लोग भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि कोर्ट जाने की जरूरत क्यों होनी चाहिए, जब आइन में लिखा है कि इलेक्शंस ने होना है नॉट लेटर देन 90 days. लेकिन मेरे ख्याल में 2-3 वजूहात है.
کہ یہ یہاں پہ اینڈ اپ ہونا تھا. ایک تو یہ کہ ہماری جو زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں بہت حد تک جو جمہوری پرنسپلز وہ فالو کرتے ہیں وہ کنوینئنس کے حد تک تو فالو کرتے, اس سے زیادہ نہیں. اور اس میں ہم سب کو اپنے سٹینڈرڈز بہتر کرنے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس کیس میں شاید یہ یاد رکھیں کہ وہ لوگ بھی ایکسپوز ہو گئے جن کو مانا جاتا ہے اور جن کی تاریخ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پرنسپلز پہ سب سے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. دو ہی پارٹیز ہیں پاکستان میں جن سے وہ ڈیموکریٹک پرنسپلز روایتی طور پہ جڑی گئی ہے, ایک پیپلز پارٹی, ایک میرے خیال میں جو ہمارے صوبے میں ANP ہوتی تھی. لیکن یاد رکھیں کہ ایفیکٹولی وہ دونوں پارٹیز بھی اس کنٹروورسی میں خاموش تھی, پہلی چیز. دوسری چیز, 18ویں ترمیم کی بہت بات ہوتی ہے, بہت صوبائی خود مختاری کی بات ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں یہاں پہ اس ایشو کو شیلف کرنا آسان تھا, یا لوگوں کے خیال میں آسان تھا, کیونکہ انتخابات صوبوں میں تھے. اور یاد رکھیں کہ ہماری جو ایلیٹ کی مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ صوبے کاؤنٹ نہیں کرتے, کہ پاکستان وہی ہے جو اسلام آباد سوچتا ہے. حالانکہ یاد رکھیں کہ پاکستان از اے یونین آف دا اسٹیٹس, اور ہم جب بھی یہ سمجھیں گے یونین آف دا اسٹیٹس سے مراد کے 4 صوبوں میں پاکستان کے لیے ووٹ ہوا اور وہ خود سے پاکستان بنے, 3 صوبوں میں اسمبلیز میں ووٹ ہوا, پنجاب میں, سندھ میں اور بنگال میں, اور ایک صوبے میں ریفرینڈم ہوا, پبلک ریفرینڈم ہوا, وہ پاکستان کا حصہ بنے. تو جب بھی ہم یہ سمجھے کہ صوبے ہی پاکستان ہے, بلوچستان شاید اس وقت گورنرز پروونس تھا, میرے خیال میں وہاں پہ کوئی ووٹ نہیں ہوا تھا, لیکن جب بھی ہم سمجھے کہ صوبے پاکستان ہے, ہماری تھنکنگ جو ہے وہ فرق ہو جائے گی. سیکنڈلی, جو آٹونومی صوبوں کو گارنٹی کی گئی ہے, صوبے میں بھی الیکشنز اتنے ہی ضروری ہے جتنے وفاق میں. اور یہ کہنا, اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جی کسی صوبے میں 6 مہینے حکومت نہ رہے تاکہ جب وفاق میں الیکشنز ہوں تو اس وقت صوبوں میں بھی ہوں, تو میرے خیال میں یہ دکھاتی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی تھنکنگ ڈیفیکٹو ہے. اور یہ میں پارٹی ہیٹ کہہ کے نہیں کہہ رہا, یہ میں جو میرا ذاتی خیال ہے پاکستان کے بارے میں وہ کہہ کے کہہ رہا ہوں. یہ ڈبیٹ ضرور ہو سکتی ہے کہ اس میں کیا پاکستان کی جو ڈیموکریسی جس لیول پہ ہے کہ آیا یہ بہتر ہوگا کہ وفاقی اور صوبائی الیکشنز ایک ساتھ ہو. لیکن اگر یہ ڈبیٹ کرنی تھی تو یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ڈبیٹ پہلے چھیڑنی چاہیے تھی, یا پھر ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ وفاقی پارلیمنٹ کو توڑ کے وہی طریقے سے جو ہے وہ الیکشنز ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. اور ایک میرے خیال میں جو طرف جو ڈیسیجن پہ بھی جو ڈبیٹ ہو رہی ہے نا, کہ ایک 3-2 کی ڈیسیجن کو 4-3 بنایا جا سکتا ہے, مورلی تو آپ شاید کلیم کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی یہ کلیم کرنا کہ فیصلہ کہیں اور آنا ہے, ایک ہی بار یا کنٹیمپٹ میں جانا ہے یا ریویو میں جانا ہے, وہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا نا. ہم جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں, بہت کمزور کر رہے ہیں, اور اسی لیے بار بار یہ سوچا جاتا ہے. مجھے اس میں تھوڑی سی حیرت اس بات پہ بھی تھی کہ یہ ڈبیٹ بھی ہوئی کہ یہ مطلب مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے مینٹینیبل, اور وہ میں کہتا ہوں کیوں. کبھی کبھی کل بھی میں ایک وکیل سے بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ کبھی کبھی ہمارے جیسے عام انسانوں کے لیے سمپل چیزیں بڑی کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ جو ارجنسی تھی وہ ارجنسی یہ تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن ہمارے آئین کی بنیاد ہے, اور اگر 40 دن بعد گورنر, الیکشن کمیشن, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, گورنمنٹ اگر کوئی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینا چاہتا, تو پھر اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ایک میٹر آف ارجنسی ہے, تو میرے خیال میں ان کی جو ہے وہ اس چیز میں تعریف کرنی چاہیے. ان دس کیس ہمارے کورٹس نے بہت جو ہے وہ غلط فیصلے کیے,
لیکن اگر یہاں پہ بھی ہم بیوروکریسی میں پڑ جائیں کہ پہلے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو, پھر اس کی اپیل ہو, مین وائل 6 مہینے گزر جائیں, اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس آ جائے, then we are putting process before results. اور اس ٹائپ کی چیزوں کی ہم نے بہت بڑی بات کی ہے. Absolutely. So یہ میرا خیال ہے کہ that's a great overview, اور اس پہ میرے بھی کچھ views ہیں, but since we are privileged to have Uzair Yunus with us, یہ 90 days والی ڈسکشن تو تھوڑی بہت ہو گئی, اور مجھے پتا ہے کہ معیشت پہ عارفہ کا خود اور تیمور صاحب آپ کا بھی اور میرے بھی کچھ خیالات ہیں, لیکن ان خیالات کو شیئر کرنے سے پہلے میں نے سوچا عزیر کو تکلیف دیتے ہیں, مے بی عزیر کین گیو اس اے بگ پکچر ویو کہ آج یہ جو ڈالر کے ساتھ ہوا, یا شاید یہ کہنا چاہیے کہ جو زیادتی ڈالر نے آج پاکستانی روپے کے ساتھ کی, یا شاید جو زیادتی اسحاق ڈار نے نواز شریف اور پی ایم ایل نون کے ساتھ کی, یا شاید یہ کہ جو پی ایم ایل نون اور پی ڈی ایم نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی, یہ مطلب اس میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ فٹ ہوتی ہے عزیر؟ اور یہ مشرف I just like to add something here کہ آج سب کچھ شہباز سپیڈ پر ہوا ہے. جی, آپ کو ظاہری بات ہے پتہ ہے کہ شہباز صاحب کے بارے میں جو ہے میں تھوڑا سا سینسیٹیو ہوں, لیکن آزاد ملک ہے, آزاد رائے لوگوں کی, آپ تینوں جو ہے مسکرائیے, لیکن میرے لیے ذرا مشکل ہے. عزیر, آپ give us a picture, not so much of how we got here, کیونکہ اس پہ ہم نے آپ کو بھی پڑھا ہوا ہے اور ویسے بھی کافی تجزیہ ہو چکا ہے, لیکن ذرا لوکیٹ کیجئے کہ ہم ایکچولی اس وقت ہیں کہاں اور کس سمت میں یہ گاڑی جو ہے یہ کدھر جا رہی ہے. ڈار صاحب ڈرائیو تو کر رہے ہیں, وہ بہت تجربہ کار ڈرائیور ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کو سب کچھ پتا ہے, لیکن جو ان کو پتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, تو شاید آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے. عزیر you're muted for some reason, حالانکہ آپ یہاں میوٹڈ نہیں ہیں, لیکن آپ کے اپنے سسٹم میں کوئی بلاکج ہے. نہیں, ابھی بھی نہیں. لگتا ہے کہ ہاں اب جی, اب فائنانس ڈویژن سے آزاد ہو گیا آپ کا مائک. سازش ہو رہی تھی پیچھے مائک کے ساتھ. نہیں, I mean thank you for having me on this. لوک, آپ نے کہا کہ ڈار صاحب ماہر ہیں گاڑی چلانے کے, تو گاڑی چلانے کے ماہر ہوں گے, لیکن پھر وہ کھڈے میں گرانے کے ماہر ہیں, اس گاڑی کو فنش لائن تک لے کے جانے کے ماہر نہیں ہے, یا میکس ورسٹیپن کی طرح ریس جیتنے کے ماہر نہیں ہے. I think جو آج ہوا, it was I think one more round of capitulation in the staring contest with the IMF, جو کہ engaged ہیں وہ سپٹمبر سے IMF کے ساتھ. And more so یہ ایک ہمارے I think it's a bit of our own fault as well, including mine, کہ ہم اس پوری conversation کو IMF سے جوڑتے ہیں اور جوڑتے رہتے ہیں. This goes beyond the IMF. I think this is more about the consistent denial of rationality in the way this economy is being run. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ابھی میں کراچی سے آیا, my own father runs a small business, I've grown up going to Jodia Bazaar. Traders in Jodia Bazaar know how to run the economy and the dollar dynamic better than Ishaq Dar, who is an accountant, or frankly better than most of the people in Islamabad who have been running this economy for the last 30 plus years, at least in my lifetime that I've seen, including people from the other side that were there, Shaukat Tareen being key in point in that situation. Dar صاحب کی جو یہ بیٹ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ادھر پہلے وہ کرتے تھے by constraining or putting more supply of dollars in the market, burning reserves essentially. اب انہوں نے کیا کہ ڈیمانڈ کو کرب کر کے کہ اس کی پرائس کو رکھا جائے. اس سے ہو یہ رہا تھا کہ آپ کا ایک اسپریڈ بڑھ رہا تھا مارکیٹ کے اندر, بیکاز the traders knew that اس پہ کوئی بیچ نہیں رہا. آج بھی جب ٹوٹا ہے ڈالر, اس پہ کوئی بیچ نہیں رہا آپ کو 289 پہ, 313 310 پلس کی ریٹ پہ آپ کو ملے گا ڈالر اگر آپ نے خریدنا ہے تو اٹس اسٹل ناٹ ریفلیکٹڈ ان دیٹ. اینڈ آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹس کی جو چینجز ہوئیں, اور اب جو ایک طرح سے پینک آ چکا ہے مارکیٹ میں ایک بار پھر, جس سے انفلیشن کی ویو آئے گی. I think the buck stops not just with Ishaq Dar or the central bank governor, it stops with the Prime Minister of Pakistan, who has put these two gentlemen in place in the economy. And at this point, both internally and externally,
these actors don't have any credibility in my view. تو even آج جب میں briefing میں تھا اسٹیٹ بینک کی, تو وہاں جس طرح presentation دی گئی, جس طرح سوالوں کے جواب دیے گئے, it did not put any confidence in the way this economy is being managed, or the fact that the central bank has a clue about what to do with this economy. زہر سے ایک سوال ہے پلیز. I just like him to add this in particular if he's been sitting at the state bank. زہر, اگر آج ڈالر 20 روپے گرا ہے, کیوں گرا ہے؟ کیونکہ I assumed کہ جب پچھلی جو ڈیویلیویشن ہوئی تھی کہ اس کے بعد یہ کلیئر تھا کہ ابھی ڈالر یا روپے جو ہے وہ فری فلوٹ کرے گا, تو کرنسی کی قیمت مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی, اور ایٹ لیسٹ بینکس میں لگ رہا تھا کہ کچھ دنوں تک ڈالرز کی اویلیبلٹی سے پریشر بھی ہٹ گیا تھا. تو از اٹ, کیا یہ اس میں کوئی حقیقت ہے جو پھر لاجکلی لگا کہ پچھلے مہینے میں دوبارہ سے جو روپے کی ویلیو ہے اگینسٹ ڈالر وہ مینج ہو رہی تھی؟ Yeah, of course. And اس کا کوئی ایویڈنس as such میرے پاس تو نہیں ہے, بٹ جب میں کراچی میں تھا there was an open secret. مینج اس طرح ہو رہی تھی کہ آپ کی ایل سی نہیں کھل رہی, تو آپ نے ان ایسنس ایک ڈیمانڈ کے اوپر کیپ لگایا ہوا ہے ایک کموڈیٹی کا, اس سے آپ پرائس کو کنٹرول کر رہے تھے. تو جب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, تو سینٹرل بینک نے جو کہ سیٹ کر رہی تھی اس کی ویلیو تھرو collusion, I would say, for lack of a better term, with the banks itself, the treasury departments of the banks, and basically said کہ ٹھیک ہے پھر اس کا جو ہے آگے جانے دو, to narrow the gap with the informal exchange rate in the market. Now اب اس پہ immediate push back جب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جی یہ تھا گیپ اور اس کو برج کرنے کے لیے انٹر بینک ریٹ کو سلائڈ ہونے دیا 289 تک, وہ کہتے ہیں ویل جی اب اوپن مارکیٹ میں 298 چلے گیا, حوالے میں اور آگے چلے گیا, تو اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. فائدہ امیڈیٹلی اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ کریڈیبلٹی گیپ ہے. مارکیٹ فرنٹ رن کرے گی اب اسحاق ڈار کی پالیسی کو, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب بھی تھوڑے سے ڈالر ان کے ہاتھ میں آتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو مارکیٹ کہے گی اب میں نے ایک پریمیم لگا دیا اس کے اوپر. That's how market actors behave. تو it takes time to restore that credibility. And the last few days جب میں کراچی میں ہی تھا تو یہ ایک بات تھی کہ پھر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے اندر اور انٹر بینک میں گیپ بڑھ رہا ہے, and everybody knew that this gap will in a matter of days will be broken, and essentially was broken today. So ایک جو اس میں ایک نہیں دو آئی تھنک انٹرسٹنگ ایلیمنٹس ہیں عارفہ. ایک تو یہ کہ ڈار صاحب جو آئے اور انہوں نے کسی طرح سے کنونس کیا ایک بہت تجربہ کار 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والی شخصیت کو کہ ان کے پاس کوئی میجیکل سلوشن ہے جس سے وہ ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو مارکیٹ سے ہٹ کے ہے. ان کے پاس ایک کوئی بیسکلی کوئی جادو ٹوٹکا ہے جس سے وہ یہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے وہ یہ کہ ان کا ویو یہ تھا, اور انہوں نے بہت دفعہ متعدد دفعہ یہ بیان دیا کہ مجھے آئی ایم ایف سے بات کرنا آتی ہے. اس میں جو مفروضہ اس میں شامل ہے وہ یہ کہ ایشو یہ نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی ہوئی ہے, ایشو یہی نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے اور وہ امپورٹ زیادہ کرتا ہے ایکسپورٹ کم کرتا ہے, ایشو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹیکس کم جمع کرتا ہے لیکن خرچے زیادہ کرتا ہے, پینشنز دیتا ہے بہت ساری گورنمنٹ امپلائیز کو وہ پیسے دیتا ہے, ان کو ریزز دیتا ہے, فوج کا بہت بڑا خرچہ ہے, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ڈیٹ سروسنگ کا بہت بڑا ایک بوجھ ہے. ایشو یہ سارے نہیں, ایشو یہ کہ آئی ایم ایف سے بس بات کرنا نہیں آتی تھی پچھلے وزیر کو. تو یہ جو مفروضے مطلب میرے لیے اٹس ہارڈ ٹو سوالو دیٹ اتنی زیادہ تجربہ کار ٹیم جو ہے وہ اس طرح کے مفروضوں کی بنا پہ اس نے یہ اس لیول کی فیصلہ سازی کی کہ اسحاق ڈار کو واپس لے کے آئے. کیا آپ کو کوئی بہتر سمجھ ہے کہ اسحاق ڈار کیوں وزیر خزانہ بنے جب ایکچولی آئی ایم ایف پروگرام تو آن ٹریک آ گیا تھا سپٹمبر میں جب ان کو تبدیل کیا گیا مفتاح اسماعیل کو اور ڈار صاحب کو لایا گیا؟ عارفہ
मुशर्रफ, बेसिकली दिस इज ऑब्वियसली इसके अंदर एक बहुत ऑब्वियस वजह तो वही है जो एवरीबडी वांट्स टू पॉइंट आउट कि फैमिली की एक डोमिनेशन है, एक खानदान जो है वो पार्टी को डोमिनेट करता है, तो इसलिए ये फैसला हुआ. पर आई थिंक जरा ज्यादा डीप रूटेड मसला है. अगर थोड़ी सी इसमें मुझे आप इजाजत दें टू सेल्फ इंडल्ज, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि इसमें जो मेरी इंडस्ट्री है उसका भी कसूर है. हमने जो मईशत पे हम डिबेट करते हैं वो हम बहुत उसको एक सतही लेवल पर करते हैं और हमने उसको रिड्यूस कर दिया है टू इंडिविजुअल्स. So अगर सिर्फ मैं इतना एग्जांपल लूं, and I'm not just taking this because I don't want to go on and on, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब पावर में आई तो हमारी दो चीजों के ऊपर बहुत टेलीविजन पर बहस रही. एक हमने कहा हाय डॉलर, डॉलर की कीमत ये हो गई, डॉलर की कीमत हो गई. दूसरा हमने कहा कि ये बहुत इनकॉम्पिटेंट है, ये ना तजुर्बाकार है, ये इनकॉम्पिटेंट है. उसमें कोई सही बात भी होगी, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत थी. बात ये कि जब आप बहुत ये ब्रॉड ब्रश में सिर्फ डिबेट को करते हैं ना, फिर क्या होता है कि उसके अंदर फिर सारा जो इंडस्ट्री थी वो भी कन्विंस हो गई कि मईशत की जो हैंडलिंग है ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस की मार है, कॉम्पिटेंट लोग आएंगे ठीक हो जाएगी. किसी ने ये नहीं सोचा कि ओके एग्जैक्टली कहाँ पीटीआई से अगर कोई गलती हो रही है तो इनकॉम्पिटेंस की वजह से, कहाँ स्ट्रक्चरल इश्यूज है. पीएमएलएन के अंदर भी ये बात बैठ गई विद द एवरेज पीएमएलएन पर्सन कि ये इनकॉम्पिटेंस है. वीओएनसी होता है अप्रैल के अंदर, मिफ्ता इस्माइल बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर. अब वो भी एज फार एज पीएमएलएन इज कंसर्न्ड उनका भी वहां कम वक्त गुजरा है डार साहब को लेके. वो जब महंगाई की पहली लहर आई, इफ आई कैन कॉल इट दैट, तो वो जो कंस्टिट्यूंसी लेवल पे उस पार्टी में भी बहस शुरू हुई ना, वो ये हुई कि ओ हो ये डॉलर उतना ऊपर चला गया, ये देखे ना ये मिफ्ता इस्माइल को तो ये काम नहीं पता, वो डार साहब बेहतर मैनेज कर रहे थे. तो ये डिबेट फिर टेलीविजन चैनल्स पे फिर उसी तरह दोहराई गई. पहले हम वो कि ये पीटीआई इनकॉम्पिटेंट थी, अब वो मिफ्ता इस्माइल की इनकॉम्पिटेंस हो गई. तो रोज क्या हो रहा था, हर तीसरे दिन एक एंकर बैठता था, डार साहब लंदन से ज्वाइन करते थे, वो कहते थे मैं डॉलर को इस पे ले आऊंगा, और लोग कहते थे वाह वाह ये तो देखे ना इन्होंने तो पहले भी किया हुआ है, क्योंकि हमने तो कभी ये डिबेट ही नहीं की कि 2013 से 2018 तक क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इसहाक डार ने जो किया सो किया. वो तो सारी डिबेट जो थी वो कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंस पे चली गई. तो और वो जो कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन था पीएमएलएन का, जिसको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में भी ये गुस्सा देखना पड़ा था, उसने भी पैनिक किया. उसने कहा देखो डार साहब आ जाएंगे तो हो जाएगा. To give you one very quick example, I mean we know a very senior journalist, उनके आजकल क्लिप्स जो है वो है you can see them on Twitter, और वो उसमें क्या कह रहे हैं कि वो डार साहब आएंगे तो वो मीटिंग करेंगे, जब वो मीटिंग करेंगे तो वो एक्सचेंज रेट वालों मनी चेंजर्स को पता चल जाएगा कि ये डंडा चलाएंगे और वो फलाने को. I mean people bought it in Pakistan. हम सबको माफी मांगनी चाहिए डार साहब से. हाँ, और दूसरा they bought it because again वही वाली बात कि we're half of us are living in the 90s, we still think कि ये इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से चला लेंगे. हम इसको अभी But why don't we say it more clearly, Arifa? जी, इसको और वाज़ेह तौर पे क्यों नहीं कहते? I mean, because ... stupid. I mean, it's just stupid. They're just stupid people. They're not competent by any stretch of the imagination. And I guess maybe before Taimur gets too excited about what I'm saying, this is not, I think, just a single party issue, right, Taimur? Again, without going into the party issues, ये जो कॉम्पिटेंस वाला सवाल है कि हमारे सियासतदान अगर ये समझते हैं कि आज पेन को डिले करके या उसको अवॉइड करके या डॉज करके वो किसी तरह से अपने सिटीजन की या कंस्टिट्यूएंट की वो सेवा कर रहे हैं, तो एक्चुअली फैक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसका बिल्कुल उलट है. क्योंकि जो आराम से प्राइस इंक्रीजेस होनी चाहिए थी ओवर द लास्ट 18 months, वो पाकिस्तान में 2 या 3 शॉकिंग उसमें मोमेंट्स में आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट कॉन्फिडेंस, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा तबाह हो रहा है
that actually the longer term impact is much worse than if the prices had been increased properly. Is this a wrong set of assumptions about where we are, या इसमें कुछ आप लगता है कि इसमें हकीकत है, तैमूर? जी, मेरी आवाज सही आ रही है? ब्रेक्स के साथ तो नहीं आ रही? अच्छा, एक तो मुशर्रफ आपने एक बात की, सो लेट मी रिवील, ये जो मैं थोड़ा सा न्यूट्रल बनता हूं ना, दिस इज पार्ट ऑफ माय सीक्रेट प्लान कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पीटीआई की तरफ जो है वो नज करना, क्योंकि अगर मैं ज्यादा ओवर्टली करूं तो फिर शायद आप लोग रेजिस्ट ज्यादा करेंगे. लेकिन ये जो यू नो you give people the rope to hang themselves with, वो strategy काम भी कर रही है, so we'll keep it that way. But I just want to add here that Taimur himself admitted I'd like to say believing in the PTI is having rope to hang oneself. Sorry, I said, Taimur, you just admitted basically na कि sort of slowly coming to the PTI side is the equivalent of having rope to hang oneself. But you know, you hang yourself, you go to heaven. So अच्छा, तो देखिए, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता. और मैं ऑफ कोर्स ये कहूंगा कि हमने 2-3 साल में एक्चुअली इन हाइंडसाइट अगर आप देखें तो बहुत कुछ ठीक भी किया था, लेकिन उसको एक साइड पे छोड़ें, क्योंकि वो दोबारा से वो डिबेट हो जाएगी जहां पे आप डिफेंड करना चाहेंगे. रियलिटी इज कि जैसे पाकिस्तान चलता है 2-3 डायमेंशंस पे इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक मैनेजमेंट, वो ऐसे चल नहीं सकता. और अफसोस की बात यह है कि 10 महीने पहले भी जब ये गवर्नमेंट आई विद द मैंडेट के पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना है, तो ये रियलाइजेशन नहीं थी कि आपने क्राइसिस मैनेजमेंट करना है. लेकिन उससे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि आज भी, अभी भी रात के 11:36 बजे भी जब डॉलर 290 को टच कर चुका है इंटरबैंक में, कि आज भी ये रियलाइजेशन ना पॉलिटिकल लीडरशिप में है, ना फाइनेंस डिवीजन की एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप में. मैं आपको जो दूसरी बात कह रहा हूं मेरी हाइपोथेसिस है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी ब्यूरोक्रेसी की इस टाइप के क्राइसिस मैनेजमेंट में ट्रेनिंग नहीं हुई. और एक्चुअली हमारा जो पाथवे है, हमारा जो रास्ता है एवोल्यूशन का टुवर्ड्स द राइट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, वो शुरू होता है जहां पे हम वो फैसले लें या उनके ऑल्टरनेटिव्स लें जो हमें आईएमएफ कह रहा है. यार, आईएमएफ क्यों कहे कि आप जो है आपकी टैक्स टू जीडीपी कम है? ये तो 30 साल से ही है. व्हाई डोंट वी डू समथिंग अबाउट इट, राइट? आईएमएफ क्यों कहे कि जो सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर में या एनर्जी सेक्टर में, उसका कुछ करना है. कुछ चीजें तो आईएमएफ को पता भी नहीं है. जैसे जब मैं चिल्लाता था कि ये प्रोविंशियल सरप्लसेस फेक है, they will also hit you and bite you in the back. Leave that for another discussion as well. लेकिन वाकई sometimes history is the best judge. अगर हमें पाकिस्तान किसी और तरीके में चलाना है तो देन ये रियलाइजेशन होनी बड़ी जरूरी है कि कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होने, अभी से होने. और मैं आपको यकीन दिलवाऊं कि अगर वो होने शुरू हो तो आप देख लेंगे आईएमएफ आपकी बातें जो है वो बड़ी आसानी से माननी शुरू करेगी. आपकी क्रेडिबिलिटी ना आज मार्केट्स में है ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में. मैं 2 चीजें कहूंगा मुशर्रफ, जस्ट गिव मी अ मिनट इफ दैट्स ओके. एक, मुझे याद है बिजनेस स्कूल में एक हमारी टर्न अराउंड मैनेजमेंट की क्लास हुई थी, जहां पे एक टर्न अराउंड मैनेजर आया था जिसने यूरो डिज्नी को और मिलेनियम डोम को टर्न अराउंड किया था जब वो बैंकरप्ट हो रहे थे. उसने पूरी क्लास से पूछा था कि यार ये 2 इदारे बैंकरप्ट हो रहे थे, मुझे ये बताएं कि इनको ठीक करने के लिए क्या करना है. तो कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट से, कोई सीनियर मैनेजर्स थे, हम सब ने थीरियां शीरियां चलाई, कहा तुम सब बकवास कर रहे हो.
پہلے دن جو میں نے کیا کہ ہمارے جو سینٹرل لنڈن میں آفیسز تھے وہ میں نے دے دیے اور میں لنڈن سے کوئی 30 میل باہر موو ہو گیا تاکہ میرا جو رینٹ کا بل ہے وہ 1/4 ہو جائے. 5ویں دن تک میں اپنی آدھی ورک فورس جو ہے وہ اس کو فائر کر چکا تھا. آج ملینیم ڈوم بھی بڑا کامیاب ہے, آج یورو ڈزنی بھی بڑا کامیاب ہے, بٹ دے ٹک ڈراسٹک ایکشن. ہم تو آج تک 22 گریڈ آفیسرز کو ایگزیکٹو الاؤنسز دے رہے ہیں جو ان کو نہیں مل رہی ان دس کرائسس, رائٹ. تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈز IMF اور the World Bank or anyone take you seriously اور how are they at fault? بینکرپٹ آپ ہو رہے ہیں, $3 بلین سے کم آپ کے پاس رہ گئے ہیں, and you still want to play games saying کہ میں اپنی کرنسی کو manipulate کیسے کروں گا while telling them کہ میں نہیں کر رہا, right? It is almost کہ you have decided کہ you are too big to fail اور تمہیں کوئی نہ کوئی ریسکیو کر دے گا. And what we actually need, and I think یہ تو clear ہو گیا, this government is not going to do it. کہ اگر ہم نے بھی آنا ہے, ہم نے ابھی جو ہے ایکچولی, اینڈ آئی ہوپ یہ ہمارے اوپر بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوگی کہ اگر ہم نے اکانومی کو ابھی چلانا ہے تو وی ہیو ٹو ٹیل دا ٹروتھ ٹو پیپل اینڈ وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو میک شیور کہ ان 2 to 3 years وی میک دا چینجز جس میں اکانومی میں تھوڑی سی جان آئے, اور اس میں اکانومی کو مارکیٹ کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہمارے فسکل سائڈ پہ لاسز ہیں یا جو ہمارا یہ ڈالرز کے امبیلنس کا ایشو ہے جو کہ ایکچولی ڈریون ہے انویسٹمنٹ سے, انویسٹمنٹ آئے گی تو ایکسپورٹس بھی ہوں گے, انویسٹمنٹس اور ایکسپورٹس ہوں گی تو آپ ایکچولی جو ہے وہ اس ملک کو چلا سکیں گے, آپ کے پاس ڈالرز آئیں گے. کیونکہ یہ میں نہیں مانتا کہ ہم امپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ ایبسولوٹ ٹرمز میں دیکھیں تو what do we actually import? کچھ نہیں. تو یہی تو تیمور, یہی تو رونا ہے. ہاں, یہی تو رونا ہے کہ آج سے چند سال پہلے جب اوریجنلی ڈاکٹر شمشاد اختر آئی تھیں ایز کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر, تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا that she basically slashed and burned and she instituted an austerity, which basically the first thing that happens when you do austerity, essentially the purpose is to reduce your current account deficit, and the logic is جو آپ نے ابھی پیش کی اس کی opposite logic ہے. اور یہ ٹریڈیشنل پاکستانی adult management of the economy کا جو پہلا رول بک ہے یا پلے بک ہے, اس میں جو پہلا پیج ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے جاؤ اور امپورٹس بند کرنا شروع کر دو تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے. اور میں اس چیز کو میں اس کو ڈیفیسٹ ہاکزم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ڈیفیسٹ لیننگ اپروچ ہے بجائے ایکچوئل پرابلمس کو سالو کرنے کے. Not to get into the whole CAD debate, which, there's no question that in certain circumstances you do have to, no matter how you do it, you have to reduce your outflows so that the system makes sense. Lekin Uzair, if I bring this to you, a lot of what Taimur said, nobody can disagree with, and I think, there's wide consensus ki sari cheezein honi chahiye. لیکن اسی ملک میں جہاں پہ میرا خیال ہے عام شہری بھی یہ وہی باتیں کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں اس معیشت میں بدلنی چاہیے. تو ایک سائڈ پہ تو ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن دوسرے سائڈ پہ IMF کے ساتھ نیگوشیشن کے دوران اسحاق ڈار صاحب اور فائنانس ڈویژن کے جو ارسطو اور افلاطون ہیں, انہوں نے جا کے IMF کو کہا کہ دیکھو فکر نہ کرو, 170 بلین روپے تو ہم بینک اکاؤنٹس پہ ایک لیوی لگائیں گے ون ٹائم, جس سے ہم جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں سے تھوڑے سے پیسے لے لیں گے. اب میں اس میں میرا جو ریاکشن ہے وہ اس کو میں, کیونکہ اس خبر کو اب تقریباً 3 ہفتوں سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو جو ایکچولی میرا ریاکشن ہے وہ میں نہیں دے رہا اور وہ میں دینا بھی نہیں چاہیے. لیکن this beggars disbelief. I'm shocked that this in 2023 is a serious proposition from a finance ministry of a country of 234 million people that is on the global ranking of financial exclusion is number 3. The absolute numbers of financially excluded individuals in the world, Pakistan is number 3, but in relative terms, absolute mein to number 3 hai, relative terms mein number 1 hai. تو ایسے ملک میں اس طرح کی جو ہے سولوشنز ایجاد ہوتی ہیں. عزیر,
how do you sort of like circle the square here? How does this end up making sense? And is there really a way out? I mean, I often think कि तैमूर बहुत ज़्यादा optimism का मुजाहरा करते हैं. शायद सियासत का ये एक ज़रूरी उनसर है. लेकिन I really am struggling कि in this ecosystem, what can we point to or look at for optimism on economic reform when these are the kinds of solutions that are coming from the finance ministry? Is that? मैं एक और भी ऐड करूंगा उज़ैर से पहले, एंड देन ही कैन ऐड टू दैट. एक आपने जो बैंक अकाउंट लेवी का कहा, जो दूसरा जबरदस्त आइडिया था कि हम एक फ्लड लेवी लगा लेंगे, यानी ये टैक्स फॉर फ्लड्स, लेकिन लगाएंगे इसलिए कि जो लेवी नाम है वो सूबों के पास नहीं जाता, लेकिन ये भूल गए कि उसका ये मतलब कि अगर सूबों के पास नहीं जाएगा तो वो जो फ्लड लेवी का दूसरा हिस्सा था कि वो फ्लड के लिए था, यानी कि वो फ्लड्स पे भी नहीं लगेगा. तो अब सोचे कि इस टाइप के टैक्स लगाए थे इन्होंने IMF को दिखाने के लिए. अब देखें आप, अगर इस पे तैमूर ने बात ही कि सच बोलना चाहिए, तो पहला सच तो ये है, पाकिस्तान डज नॉट हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. पाकिस्तान हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग. ये सारे अकाउंटिंग गिमिक्स हैं. लेवी कह दो किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे डिपॉजिट पे टैक्स लगा दो, इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, पैसे इकट्ठे करके चलाओ. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है. मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आज ही सवाल हुआ सेंट्रल बैंक गवर्नर की ब्रीफिंग के अंदर कि आप ओपन मनी ऑपरेशंस OMOs कितने कर रहे हैं, उसका स्केल क्या है. तो खुर्रम हुसैन ने भी उसमें थे, उन्होंने इसके बारे में बाद में ट्वीट भी किया कि सिंस अ फ्यू मंथ्स अगो, पिछले कई महीनों में 20% of broad money has been injected into the system by the State Bank of Pakistan. This at a time when the bank itself is raising interest rates. तो एक तरफ आप कह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर रहे हैं, पैसे की कदर बढ़ा के, उसकी कीमत बढ़ा के, that's his interest rates. दूसरी तरफ आप पैसा डाल रहे हैं सिस्टम के अंदर. तो are you trying to tighten the monetary policy or make it loose? Is the question, right? But we don't get an answer to that, because what is the central bank doing? The central bank through the IMF उसको कह रही है आप पैसे की कीमत बढ़ा के इन्फ्लेशन कम करें. उनको भी मालूम है लिंकेज बड़ा वीक है, लेकिन दे आर डूइंग इट थ्रू द बैक डोर. क्यों? क्योंकि आपका जो सॉवरेन है, i.e. द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस are running deficits which are compounding the inflationary problem in the country. Your cash in circulation right now is 20% of GDP. इतना कैश नहीं होना चाहिए मईशत के अंदर. इसीलिए आप जैसे लोग और मुझ जैसे लोग जब पाकिस्तान आते हैं तो कहते हैं यार सड़कें तो फुल हैं, बाजारें फुल हैं, कौन सा क्राइसिस? इसलिए क्योंकि कैश आपने मार्केट में डाला हुआ है, वो आग की तरह जल रहा है पूरी मईशत के अंदर. इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. मैं अटलांटिक काउंसिल में हूँ. जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर बने और वो स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए आए यहाँ, तो वी डिड इवेंट विद हिम ऑन थर्सडे आई बिलीव, एंड मंडे उससे पहले वाज निर्मला सीतारामन. अब निर्मला सीतारामन, द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सप्लेन्स उनकी strategy to deal with the COVID pandemic, which was much tougher on India in terms of the multiplier of capex, multiplier of direct benefit transfers into the economy, किस तरह वो work through करता है मईशत के अंदर, और फिर उस तरह उन्होंने strategy बनाई economic growth rev up करने के लिए after the disaster that was the COVID pandemic. Mifta Saab comes in and he's very candid in his usual self and pretty much says कि हमें तो FBR के थ्रू ये भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान का टैक्स मल्टीप्लायर क्या है. यानी कि अगर आप टैक्स कट देते हैं ईदर ऑन कैपेक्स और इनकम्स और कॉर्पोरेट इनकम्स और समथिंग एल्स, हमें नहीं मालूम वो इकोनॉमी में वर्क थ्रू किस तरह करता है. दिस इज अ कंट्री ऑफ 230 million people, as Musharraf you said, financially excluded, blah blah blah, facing economic crises. आपके मैनेजर्स के पास बेसिक डेटा नहीं है एक मॉडर्न इकोनॉमी चलाने का. So it's not a surprise to me that a proposal like putting a flood levy or a proposal like a levy on deposits is put into place, because that basic thinking does not happen in the Ministry of Finance. The idea is to just collect more money. And again, this is not, I agree with, I'm optimistic in the sense that the solutions to this crisis are not rocket science. अब मेरी बात हो रही थी किसी से, उन्होंने कहा डीवैल के बाद भी जो है minimum wage in Pakistan in dollar denominated terms is a bit higher than Bangladesh, India, for example, in our neighborhood. उन्होंने कहा हम फिर भी अब competitive नहीं है, एनर्जी हमारी वैसे ही महंगी है, लेबर भी हमारा महंगा है, तो अब क्या करें?
تو میں نے اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی, and again hopefully Taimur is listening and will take this into account if and when his party comes back into power, کہ آپ کا ویج آپ کو یا آپ کی ڈالر ریٹ آپ کو بڑھانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کے ملک کے اندر کھانا مہنگا ہے, آپ کی دال امپورٹ ہوتی ہے, آپ کا وناسپتی گھی امپورٹ ہوتا ہے, آپ کا آٹا امپورٹ ہوتا ہے, تو ان اینی چائے امپورٹ ہوتی ہے. ان اینی بیسک اکانومی دیٹ نیڈس ٹو گو فرام ایگریکلچر ٹو انڈسٹریلائزیشن, the first component is cheap food. This is why the Brits colonized the world. They were searching for cheap food to fuel the industrial revolution because they couldn't grow enough of it, right? تو اگر آپ کا کھانا ہی مہنگا ہے تو آپ کا لیبر مہنگا ہوگا, of course, otherwise you'll have riots on the street. So now you need a higher overvalued rupee to bring in cheaper food, to fuel the food that is there in the country. And oh, by the way, your population keeps growing like crazy at the same time. So you need to solve your food policy problem number first. Then you go into your energy sector, and then you go into the disincentives in the economy, jahan, I'm sorry to say this to Taimur صاحب, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر لیڈرشپ لیول پہ ابھی بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں سولوشن یہ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پلاٹ بیچ کے پاکستان میں ڈالر لائیں گے. دس از اے ڈیزاسٹر. آپ کی پارٹی نے سب سے لمبی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی اس ملک کی تاریخ کے اندر, which is still devastating the economy and has distorted the economy. So we need to have rational policies, and the solution is not rocket science. And if you implement them sustainably over the long term. Just sorry, not to interrupt, but to keep it light and also truthful. آپ نے مطلب آپ اب چھٹے اوور کی 8ویں باؤنسر کرا رہے ہیں, وہ نو بالز بھی پتہ نہیں کتنی ہوگی. تیمور کو گئے ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے. اٹس جسٹ می اینڈ عارفہ. تو آخری باؤنسر بھی کرا دیتا ہوں, جس سے شاید ہم تینوں کے لیے, آپ دونوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہو, میرے لیے شاید کم. کہ ایک بات آپ نے بھی نہیں کی, آپ نے کہا سیاستدان جو ہیں شارٹ ٹرم پالیسی, ایک سب سے بڑا اور ون آف دا لارجسٹ ڈسٹورٹنگ امپیکٹس ان دی اکانومی ان پاکستان از دا ملٹری. تو اس کا جو رول ہے معیشت کے اندر, ایدر تھرو DHAs اور فوجی فوڈز اینڈ فوجی فرٹیلائزرز, یہ سارا بھی اس پہ بھی بات ہونی چاہیے, اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی کربڈ ایز ویل بیکاز اٹ ڈسٹورٹس دی اکانومی. So on economic distortions, Arifa, go ahead. I just wanted to lead off from where Uzair left it, if you allow me, very quickly. مجھے اکانومی کا نہیں پتا کچھ خاص, پر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ دیکھیں, جس ملک میں ہر وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ دے آر فائٹنگ فار دیئر سروائیول, اور دوسرے کو یہ لگتا ہے کہ مطلب کہ ہم پاور میں ہیں بٹ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کتنی دیر رہیں گے نا, تو اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر nobody is going to sit down and make difficult decisions. ہمیں اپنی جو ٹرانزیشن آف پاور ہے نا, اس میں اسٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. اگر ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ لگے گا کہ بس اب ہم پتہ نہیں آج رہیں گے یا کل رہیں گے, اس لیے ہم جلدی سے اگلا الیکشن جیتنے کی کوشش کر لیں کیونکہ پتہ نہیں اس کے بعد تو ہمیں موقع ہی نہ ملے, تو پھر نہیں ہوگا. اب کیا ہو رہا ہے PMLN کے ساتھ پچھلے 10 مہینے سے, کیا ہو رہا ہے, they're basically fighting for their survival. They think that now it's now or never. اگر وہ یہ اس وقت کوئی مشکل فیصلے کر لیں گے تو ابھی بھی جو ان کے پاس 4 سیٹس آ رہی ہیں وہ نہیں آئیں گی. تو if we really need to have the kind of reforms that we all keep talking about, the first thing is that the political parties need to stop looking over their shoulders. However bad Nawaz Sharif or Imran Khan or Dar or anybody is, if they do not stop looking over their shoulders, if they do not think that they will get another chance to win an election fairly and squarely, nobody is going to make difficult decisions. And the sooner our establishment realizes this, the better it is, because it comes back to that کہ میں اگلے دن ایک ہم صاحب کو انٹرویو کر رہے تھے جو ایڈوائز کرتے رہے حکومتوں کو. انہوں نے کہا کہ آپ یقین کریں ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, بٹ ہر حکومت اتنا ڈرتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ذرا اسٹیٹس کو چھیڑیں گے تو ہماری حکومت چلی جائے گی, کہ وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے. This has to change, and that change can only come from one quarter. Because now it's come to the stage where we are wondering whether Pakistan is going to survive or not. Survive as a functioning state. So I think these decisions have to be made at a level which is perhaps beyond the political parties. This is not just their responsibility.
So on this note of survival, we're approaching 50 minutes, and maybe we should think about wrapping up. This has been a fantastic discussion. Taimur must have had some technical difficulty, but I think it's been a rich discussion. ये जो question है survival का, क्योंकि एक तरह से जो originally सोच थी वो तो यही थी कि नौजवान पाकिस्तानियों से engage करें. मुझे डर ये लग रहा है कि हम फिर से एक echo chamber जो है वो तैयार कर रहे हैं. Although luckily Uzair is a millennial and not Gen X, thankfully. एक तो ये कि, sorry, I have to disrupt my chain of thought because I have to put up this comment that has just come up, Arifa. I don't know who this is or what this is, लेकिन ये जरूर आप गौर से जरा देख लीजिए, स्क्रीन पे आ गया है. तो मेरा ख्याल है we should take a couple of minutes and acknowledge and appreciate that this is 100% true, and I'm very lucky that Arifa has agreed to do this with us regularly. It's a real treat and a privilege, Arifa. Thank you. That last part actually is not okay. I didn't read that part. I just thought articulate and graceful, so I'm just going to actually hide that. I just finished reading it. That's inappropriate, dude. Just clean it up a little bit. और फिर इमरान उल्ला भी कुछ कह रहे हैं तो हम उनका कमेंट ले आएंगे. ये जो क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है, मेरा ख्याल है I think the question has already been answered. When you have a country of 234 million people that has nuclear weapons, that has the 5th largest military on the planet, and possibly one of the most capable militaries on the planet, when you have a country that produces, I think the number, वो एक अपना का लेटर आया हुआ है आजकल, अपना वाले जो हैं वो बड़े अपसेट हैं कि बिजनेस क्लास को एक्स्ट्रा टैक्स पड़ रहा है. आई डोंट नो इफ यू सीन दिस लेटर. जो डॉक्टर्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, उन्होंने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि देखें हम बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं और आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के अमेरिका में जो मुकीम डॉक्टर हैं. अच्छा, एक नहीं तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो अमेरिका से टिकट लेते हैं, उन पे टैक्स थोड़ी ना लगेगा. अब आई डोंट नो कि वो क्या मतलब लॉजिक क्या है, लेकिन जो भी लॉजिक है, the point I wanted to make was that in that letter it says that there's 17,000 physicians of Pakistani origin in North America, which sounds, I mean, that sounds reasonable. That's a huge number. आप Wall Street जाएं तो आपको, you know, obviously और भी ममालिक के लोग हैं, लेकिन like disproportionate numbers of Pakistanis. इतना talent ये मुल्क produce करता है, इतनी बड़ी इसकी capable अच्छी फौज है. जब भी आप किसी ब्यूरोक्रेट से बात करें, लगता है कि वो सारे हार्वर्ड से या तो पढ़ा के आए हैं हार्वर्ड पे या पढ़ के आए हैं. इसके बावजूद जब मुल्क इतना मखलूज और इतना बेचारा और मिस्कीन हो कि एक IMF की जो ट्रांच है उसकी वजह से पूरा मुल्क और उसकी मईशत जो है वो ऑलमोस्ट तबाह हो जाती है, तो ये आई मीन isn't the game over already? उज़ैर, ये जो हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी, हम इधर अभी कहाँ बैठे हैं? Like what is the trigger point we're waiting for जब हम कहेंगे हाँ अब ये हो गया है? मुझे तो लग रहा है वो चीज जिससे हम डर रहे हैं, जिसके बारे में हम आने वाले दिनों का कुछ सोच रहे हैं, that has already happened. I agree, it's happened, and I think वो recognition नहीं है क्योंकि दो पाकिस्तान है, right? एक पाकिस्तान है जहाँ अभी भी रेस्टोरेंट के लिए आपको रिजर्वेशन करानी पड़ती है, जहाँ अभी भी सुपरमार्केट के शेल्फ्स फुल हैं. LC नहीं खुल रही लेकिन इंपोर्टेड चीज़ें सुपरमार्केट पे कैसे मौजूद हैं? ये सवाल जो है करना चाहिए. इसी तरह आपके बॉर्डर पे आपने फेंसिंग लगाई हुई है लेकिन गंदम बॉर्डर के अक्रॉस जा रहा है. तो आई थिंक द रेकनिंग इज हियर इन एनी केस. उसका जो इम्पैक्ट है जिसका लोग शायद इंतजार कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑन द वेरी रूलिंग क्लास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, कि जब तेल आना बंद हो जाएगा उसके पैसे नहीं बचेंगे, जिसे डिसऑर्डरली डिफॉल्ट सिनेरियो कहा जाता है. श्रीलंका में हुआ या लेबनान में उससे बुरा हुआ तो शायद माने. एंड अगेन मेरा बिलीफ ये है कि द सॉल्यूशंस टू दिस इकोनॉमी आर नॉट रॉकेट साइंस. ये ऐसा नहीं है कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है. इट्स matter of months, if not a couple of years. If you start reforming, capital will flow into Pakistan just because the momentum of the demographic dividend is in his favor. Even though aapki youth literacy वगैरह पे, Mosharraf, you know this better than I do, is weak. Your skilling is weak. Your women inclusion is weak. But generally the dynamics are positive. लेकिन ये जो self-inflicted wounds हैं,
and I agree with Arifa that ये जो crisis है political disruption जो cause की जाती है by the establishment itself in particular, that's the root cause. And if you don't solve for that root cause, unfortunately, I've been saying this since at least I was looking up at my notes since May 2022. This is the most significant threat to national cohesion since 1971. And people need to think of it like that and think beyond themselves. And unfortunately, so far, I don't see people realizing that reality. So, this has been fantastic. I feel like our closing note should be, by the way, Uzair, you have a lot of fans that you've brought over. Thank you for that. One of them is asking how your India trip was. I know you're planning on doing a bunch of stuff on that, so we won't ask you to get into that today. But thank you for coming on to Generalization Z and helping Arifa and Taimur and myself understand the dimensions of the economic crisis. Adil Rashid, ये जो closing note है ना, ये मुझे Adil Rashid या Adil Rashid कह रहे हैं, we need technocrats in place, and that can only come by if we have a presidential system in place. Now, the reason I'm putting this up on the screen is कि ये जो सवाल है, ये बुरी नियत से, ये at least ये बंदा नहीं कर रहा. ये मुझे यकीन है कि people care about our country. You know, everybody loves their country. And this is not just my country or Arifa's country or your country. It's also Adil's country. So Adil has a right to have this view. And I think ये हमारे ऊपर फिर हमारा जिम्मा बनता है कि हम इसको फिर अगर हम तीनों, and I'm sure तैमूर भी इसी तरह जो है वो कहेंगे please don't do it. Hopefully on the next episode, Arifa, maybe we can spend some time on this, on the mythology and on this idea that somehow a presidential system can solve the problems of the country. Last word to you, Arifa, before we close out. You're muted. Arifa, you're muted. We can't hear you. Sorry. Yeah, I just, I mean, again, you know, I think one has said enough, but yes, we should do an entire session on technocrats, presidential system, you know, the whole thing. But really, I think our politicians just need to be given a chance. And if we can fix the bureaucracy, we will not even need technocrats. I think our major problem is that our bureaucracy has collapsed. जो specialization उनको provide करनी चाहिए, so that the politicians can just come in and make, you know, the bigger policy decision. The input isn't there, so we end up thinking कि oh ये मसला ये है कि हमें technocrats चाहिए, but we don't need them to, you know, parachute in and out. We need them right there in the bureaucracy, and we need them, you know, on a permanent basis, perhaps in some form or the other. Spot on. This has been great. Arifa Noor, thank you again, as always, very much. Thanks to Uzair Yunus for joining us. Thanks to Taimur, as always, for joining us. And most of all, thanks to those जिन्होंने हमारे साथ ये पिछला घंटा गुजारा और हमारे साथ कमेंट्स भी शेयर किए, सवाल भी पूछे. इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे और मेरा ख्याल है अगला जो है हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे कुछ डिस्कशन करेंगे और शायद और लोगों को भी इस पे जो एक्सपर्टीज है उनको लेके आएंगे. अंटिल देन आपका बहुत बहुत शुक्रिया. विद दैट I will say Khuda Hafiz, and we will begin some fade out music in the background. Thanks again, Arifa. Khuda Hafiz.